Good morning students. Now open your maths book. Today I will explain you chapter 6 addition. When we put things or numbers together we do addition. The sign of addition is plus. Look at the sign. It's a sign of plus यानी addition. ये addition का sign है. The answer we get is known as sum. एडिशन का जो आंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सम. यस, द आंसर ऑफ एडिशन इज सम. 1 एड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. आपको काउंटिंग फॉरवर्ड बोलनी है यानी आगे की तरफ बोल के ऐड करना है. लाइक ए 4 + 3. 4 में आपको 3 काउंट करना है. सो काउंट फॉरवर्ड 4 5 6 7. 4 5 6 7. 4 + 1 2 3 यानी 7 = 7. B 6 + 3. 6 काउंट फॉरवर्ड 6. After 6 7. After 7 8 and after 8 9. 6 + 3 यानी 6. 1 2 3 7 8 9. 6 7 8 9. So the answer is 9. 6 + 3 = 9. C 7 + 2. 7 + 2 यानी 7 8 9. 1 2. 7 + 1 2. 7 8 9. The answer is 9. D 5 + 4. 5 6 7 8 9. So 5 + 4 the answer is 9. E 2 + 6. 2 3 4 5 6 7 8. So the answer is 8. 2 + 1 2 3 4 5 6. So the answer is 8. Now question 2. Add the following. A 5 + 4. 5 और 4 को काउंट करेंगे क्या आएगा? 9. Yes, it's 9. B 4 + 7. 4 के बाद बोलो 4 5 6 7. So the answer is 7. C 5 + 9. 5 के बाद आपको फॉरवर्ड काउंट करना है 9. 5 के बाद क्या आता है? 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yeah, so answer is 14. D 1 + 8. 1 तो है ही, अब हमको 8 और फॉरवर्ड काउंट करना है. तो 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9. So the answer is 9. Yeah. E 4 + 0 = 4. 4 में अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4. F 6 + 4 = 10. G 8 + 2. 8 है, अब हमको फॉरवर्ड काउंट करना है 8 के बाद. 8 9 10. So the answer is 10. H 9 + 7 = 16. I 6 + 7 = yeah, it's 13. J 2 + 6. 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7 8. So the answer is 8. Correct.
Question 3. Fill in the blanks. A. The sum of 3 and 2 is 3 और 2 का सम क्या होगा? सम मीन्स एडिशन का आंसर. The answer of addition is called sum. So 3 plus 2 is equal to 5. B. 4 added to 2 is 4 में अगर 2 ऐड करेंगे क्या आएगा? 6. B. 9 plus 3 equals 9 में 3 ऐड करेंगे 9, 10, 11, 12. So the answer is 12. D. 7 and 2 together make. जब 7 और 2 को एक साथ लिखेंगे क्या आएगा? 9. Yes. E. 6 increased by 5 is. अगर हम 5 में 6 और इंक्रीज कर दें, 6 बढ़ा दें तो क्या आएगा? 11. Yes, it's 11. Question 4. Add the following. A. 2 plus 1 plus 4. आपको ऐड करना है. क्या आएगा यहाँ? 2 में 1 ऐड करो. 2 और 1 3. 3 में 4 ऐड करो. 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Yes. B. 4 plus 2. 4 में 2 ऐड करो. 4 के बाद 2 ऐड करेंगे. 4, 5, 6. 6 में आप 2 ऐड करो. Add 2. 6, 7, 8. So the answer is 8. C. 5 plus 2 plus 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2, 1, 2. Plus 1, 1. Now count. 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 यानी 6, 7 plus 1 यानी 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Answer is 8. Now D. 6 plus 2 plus 4. 6 में 2 ऐड करेंगे. 6, 7, 8. 8 में आप 4 ऐड कीजिए. 8, 9, 10, 11, 12. So the answer is 12. E. 1 plus 5 plus 3. 1 are 5, 6, 6 are 3, 9. F. 2 plus 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. So the answer is 7. Now G. 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Answer is 6. H. 5 plus 1 plus 4. 5 plus 1, 6. 6 plus 4, 6. 7, 8, 9, 10. So the answer is 10. Now number 5. Add using number line and fill in the boxes. A. 4 plus 3. Look at the example. 4 plus 3 is equal to 7. 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा. Now look at the line. Number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's the number line. Now we have to add 4. First of all we go 0 to 4. 4. 1, 2, 3, 4. Now number is 3. 3 यानी 1, 2 और 3. 1, 2 और 3. 4 plus 3 यानी 4 plus 3. 1, 2, 3. The answer is 7. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. B. 3 plus 4 is equal to 7. So first of all
3, 0 से 3 लेंगे. Yes. 3, then 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yes. So count after 3. 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Now see, 4 plus 5 is equal to 9. First of all, we draw the line 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. Draw a line like this. Then 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now count. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. D. 6 plus 2 plus 1. First of all, we draw the line 0 to 6. 0 to 6. Then 2, यानी 6 के बाद after 6, 1, 2. After 2, 1, 1. Now count forward. 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. E. 4 plus 2 plus 3 is equal to 9. 4. First we draw a line 0 to 4. Plus 2, 1, 2. Plus 3, 1, 2, 3. Now count forward. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Now take out page number 47. Exercise. Add the following. Ones, a tens. Ones, tens. The digit is 12, 27. Now we have to add it. 2 plus 7. 2, 1, 2. 1, 2. Now 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now we have to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Yes. Now count on your finger also. 2 after 2 we count 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Yes. 1 plus 2. 1, 2. Now count. 1, 2, 3. So the answer is 3. 1 after 1 we count 2. 1, 2, 3. So the answer is 3. 6 plus 1. 6. After 6 we count 1. 6, 7. 3 plus 1. 3 में 1 ऐड करेंगे. आफ्टर 3 वी काउंट फॉरवर्ड 1. 3 plus 1. 4. 3 plus 1. 4. 8 plus 1. 8 a 1. After 8, 9. 4 plus 3. 4, 5, 6, 7. 3 plus 5. 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now count together. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Now count on your fingers also. 3. After 3 we count 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. So the answer is 8. And 5 and 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 4. 1, 2, 3, 4. Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Count on your finger. 5. After 5 count 4 also. 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. Now we count 6 and 2. We have to do the sum. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 1, 2. Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the 8. Now count on your fingers. 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 plus 1. 8, 1, 9. So the answer is 9. Now rest of the exercise do yourself. Page number 48. Add the following. 1, 5, 2. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Count together and write here 8. 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Count together and write here 4. 1, 2, 3, 4. Now 0. Then 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. Count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Write 9 here. Count on your finger also. 5. After 5 count 4. 5, 6, 7, 8, 9. So write here 9. Now 2. 1, 2, 1, 1. Now count together. 1, 2, 3, 4. Write 4 here. Also count on your fingers. 2. After 2 we count 1, 2, 1, 3. After 3 we count 1, 3, 1, 4. Write here 4. Now 5, 1 plus 5, 1. After 1 we count 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 3. After 3 we count 1, 3, 1, 4. 4, 1, 5. Write 5 here. Now 2 plus 0 is equal to 2. 2 plus 3. 2 plus 3. 2 or 3. 2, 3, 4, 5. 5. 5 plus 2. 5, 6, 7. 7. We write 7 here. Now 0 plus 2. 1, 2. Plus 1. Count together. Count together. 1, 2, 3. Write 3 here.
4 plus 2 plus 2. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 0 plus 0 plus 1 is equal to 1. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. Write 9 here. So the answer is 91. 5 plus 3, 5, 6, 7, 8. Write 8 here. 5 plus 2, 5, 6, 7. 7 plus 1, 8. So the answer is 88. Rest of the exercise do yourself. Page 49. Now take out page number 51. Exercise. Add the following. 5 plus 8. जब 5 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कितना आया? 13. 13 का 3 यानी लास्ट वाला डिजिट हम यहाँ लिखेंगे एंड जो फर्स्ट डिजिट है वो चली जाएगी ऊपर एज अ कैरी. करेक्ट. 8, 5 और 8 को प्लस किया 13. We can't write here 13. We only write last digit of 13 यानी 3 and 1 is our carry. So we put carry here. Now we count carry first. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. So the answer is 33. So the answer is 33. Now look at this sum. 7. Count 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Count 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 7 और 5 को ऐड करेंगे तो आया 12. इन फर्स्ट सम मैंने पहले ही बताया था कि हम लास्ट डिजिट लेंगे. जैसे यहाँ 13 आया था, हमने लास्ट डिजिट 3 ली थी, वैसे ही सेम टू सेम 7 plus 5 12. 12 का लास्ट डिजिट होता है 2. सो वी राइट 2 हियर एंड 1 इज कैरी. नाउ काउंट 1 कैरी and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we write 10 here. Answer is 102. Now count on your fingers. 7 plus 4, 7. After 7, count forward 4. 7, 8, 9, 10, 11. 11 में we write here 1. Second digit यानी वंस. वंस वाली डिजिट हम यहाँ लिखेंगे and this first digit is our carry. 1. 1 or 6, 6 or 1, 7. Yes. Six plus 9, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. We write 5 here, second digit, and first digit is our carry. 8 plus 1, 9. So the answer is 95. Three plus 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 and 8. Count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. We write 1 here, second digit of 11. And first one is our carry. So write 1 here. 1 plus 4 is equal to 5. So the answer is 51. Rest of the exercise do yourself. Now page 53. Exercise. Add the following. 9 plus 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Count together. 9 plus 9 यानी 9 में आपको 9 और ऐड करना है, तो कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So the digit is 18. But we write here 8. Second digit of 18. And 1, first digit is our carry. So we write here carry 1. Now we add carry. 1, 2, 1, 2, 1. Now count together. 1, 2, 3, 4. So write here 4. So the answer is 48. Now next 2 plus 8. 2 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? काउंट ऑन योर फिंगर्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. It's 10. So we always write here second digit. Second digit is 0. And first digit is 1. So 1 is our carry. Now count 1 plus 4. After 1 we count 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 2. 5, 6, 7. So we write here 7. So the answer is 70. 6 plus 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 5, 1, 2, 3, 4, 5. Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is already here. So we count forward. After 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So we write 1 here. Last digit of 11. And 1 is our carry. So we write here 1. Now count 1, 1, 2, 3 and 1. Count together. 1, 2, 3, 4, 5. So we write here 5. So the answer is 51. 7 plus 3. 7 already है. So हमको काउंट करना है आफ्टर 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10. या एंड वी राइट हियर 0. And 1 is our carry. First of all, you have to count carry. Then other digits. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
Now count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So the answer is 90. Now 5 or 5? 10. Correct. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we write here 0 and 1 is our carry. 1 plus 6, 6 or 1, 7. 7 plus 2, 7, 8, 9. So we write here 9. 90. जब हमने 5 में 5 ऐड किया तो आया 10. 10 में हमेशा हम सेकेंड डिजिट लेंगे. सो वी राइट हियर 0 एंड फर्स्ट डिजिट इज आर कैरी. जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी वो हमारी कैरी होगी. देन फिर हम सबसे पहले कैरी काउंट करेंगे 1. फिर हम डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 2. और फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे, एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 90. Rest of the exercise do yourself. Now page 54, exercise add the following. Now we have 3 digits addition, ones, tens and 100. We have to do it. 2 plus 0. अगर हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2. या इट्स 2. 4 plus 1. 4 plus 1 कितना होता है? 5. 3 plus 2. 3 and 2. 3, 4, 5. So the answer is 552. Now second, 7 plus 1. After 7, 7 plus 1. Yeah, it's 8. So we write here 8. 3 plus 6. 3 and 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we write here 9. 4 plus 2, 4, 5, 6. 5 में 0 ऐड करेंगे 5. 7 में 1 ऐड किया 7 plus 1 8. 3 में 2 ऐड किया 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is 585. 1 and 3. 1, 2, 3. Now count together. 1, 2, 3, 4. We write here 4. 4 and 5. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Count together. 4 is already here, so we count after 4. After 4, we count 5. 5, 6, 7, 8, 9. So we write here 9. 6 plus 2. 6 plus 2. After 6, we count 2 more. 6, 7, 8. So the answer is 894. Now 5 and 4. आपको 5 और 4 को ऐड करना है, जोड़ना है. 5 में 4 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Now count together. 5 is already here. 5 पहले से यहाँ दे रखा है, तो हम आफ्टर 5 यानी 5 के बाद से हम काउंट करेंगे. 5 के बाद 6, 7, 8, 9. So we write here 9. 8 plus 1, 8, 9. So we write here 9. 7 plus 2, 7 के बाद हम 2 और काउंट करेंगे. 7, 8, 9. So we write here 9. So the answer is 999. Rest of the exercise do yourself. Now page number 55, 6.7. Add orally and write the answers. आपको orally add करना है. Okay? So number 1 is 7 increased by 3. 7 में अगर हम 3 और इंक्रीज कर दें, 3 बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा? 7 plus 3,
is equal to 10. 7, 8, 9, 10. So the answer is 10. Number 2, 5 and 4 make. 5 and 4 को अगर हम मिला देंगे तो कितना होगा? 5 plus 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4. So count 1. 5 is already here. 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is 9. 3, 1 added to 8. आपको 1 ऐड करना है 8 में. 8 plus 1 is equal to 9. Now number 4, 3 when added to 4. अगर आप 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अगर आप 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3 के बाद हम काउंट करेंगे. ओके, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Ram had 4 sweets. His sister gave him 2 more. How many does he have now? राम के पास 4 स्वीट्स थी, उसकी सिस्टर ने उसे 2 और दे दी. तो अब राम के पास टोटल कितनी स्वीट्स हैं? So we have to count it. Ram had 4 sweets and her sister gave him 2 more sweets. So add, the answer is 4 plus 2 is equal to 6. Yes, 4 के बाद हम 2 काउंट करेंगे. 4, 5, 6. So the answer is 6. Now number 6. 7 cows were grazing in a field. 5 more cows came over there. How many cows are there in total now? 7 काउज हैं एक फील्ड में, 5 और आ गई तो टोटल कितनी काउज हैं? 7 plus 5. 7 और 5, 12. So the answer is 12. Number 7. प्रीति had 5 books. प्रीति के पास 5 बुक्स हैं. प्रिया gave her 9 more. प्रिया ने 9 और दे दी उसे. How many books are there with her now? प्रिया, अब प्रीति के पास कितनी बुक्स हो गई? 5 plus 9. 5 plus 9. 5 और 9 ऐड कीजिए. So the answer is 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I repeat again. प्रीति हैड 5 बुक्स. प्रीति के पास 5 बुक्स हैं. प्रिया गेव हर 9 मोर. प्रिया ने उसे 9 और दी. तो टोटल बुक्स कितनी है उसके पास? 5 plus 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So the answer is 14. So the answer is 14. 8. There are 4 apples, 9 oranges and 6 pears in a basket. How many fruits are there in a basket? 4 apples हैं, 9 oranges हैं and 6 pears हैं एक बास्केट में. इन अ बास्केट. तो आपको अब बताना है कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं बास्केट में. सो वी काउंट 4 plus 9 plus 6. फर्स्ट वी काउंट 4 plus 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 6. 13, 17. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So the answer is 19. Number 8 answer is 19.